Hello everybody, this is Nirmal Chawla from Connect Overseas, and as you are aware that from last 33 years I am guiding students, giving them career counseling for countries like Australia, Canada, UK, US and many European countries as well. So today I want to talk about Australia and give you some updates. As you are aware, there are a lot of news on social media which are talking about capping of students, capping on universities, and they reduced the number of students that they want in Australia. So 2,70,000 is the figure that they had given out, and uske baad they've allocated seats to various universities with their data of 23, 24. So कई यूनिवर्सिटीज़ को सीट्स ज़्यादा मिली हैं, कईयों को कम मिली हैं. But every university, even colleges have been allocated seats. बड़ा ग्रुप है उसको थोड़ी ज़्यादा सीट्स मिली हैं, छोटे ग्रुप्स को कम सीट्स मिली हैं. So which news on this media, some are talking as it is negative news, some are talking about it as a positive news. But if you ask me, from my experience of last 33 years, the rules have been changed, of course. This next February 2025 may number would be slow or number would be less. So but still there is a lot of opportunity for students जिन्होंने aim या who's made Australia as a dream destination. So अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का as a dream destination है आपका और आप जाके पढ़ना चाहते हैं तो this is the right time. This is the right time to do your IELTS, do your PT scores, and once you have that, then we can pick up a university of your choice. Yes, of course we will apply to one or two universities. क्योंकि GT requirements का पैटर्न सेम नहीं है. कई दफ़ा कई यूनिवर्सिटीज़ का GT ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कई का कम है. बट यस एक कॉमन पैटर्न है, एक मतलब एक आपको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसमें आपको GT पास करना पड़ेगा. सो अर्लियर हम सुनते थे कि भी G8 यूनिवर्सिटी विच आर लेवल 1 उनका वीज़ा जल्दी आ रहा है. बट नाउ आई थिंक एवरीथिंग विल बी कमिंग ऑन द सेम लेवल 1 लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ को सेम ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसिंग टाइम आएगा, सेम वीज़ा अप्रूवल टाइम आएगा. And after streamlining so many things, what we hear, what news we get, and not what we are hearing now is that about 95% visa approval rate होना चाहिए. So if you're able to pass your GT, there's a good chance of you getting a visa approval from the Australian High Commission in New Delhi. But yes, of course, your family income, जैसे हम लोग बोलते हैं 12 लाख से 15 लाख रुपए होनी चाहिए. फैमिली इनकम के प्रूफ्स होने चाहिए. देन ऑफ कोर्स आपके पास फंड्स होने चाहिए, डिज़ायर्ड फंड एवरेज, डिपेंडिंग कि आप कौन सी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं या कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उस हिसाब से आपके उतने फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आ देयर. जितनी हायर लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी उतने ज़्यादा फंड्स दिखाने. सो एन एवरेज ऑफ एनीथिंग बिटवीन 33 लाख टू अबाउट 40 लाख के फंडिंग शो मनी बन जाएगा आपका, जिसके बीच में से आप 6 मंथ की फ़ीस पे कर सकते हैं, अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. ऑफ कोर्स लास्टली लेटली हमने ये भी न्यूज़ आई थी कि दैट उन्होंने हाई कमीशन अपनी फ़ीस इन्हेंस कर दी, रिवाइज़ कर दी. येस, इट इज़ $1,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर एम्बेसी फ़ीस. सो वो भी रिवाइज़ हो गई है. सो सारा कुछ देखते हुए एंड बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बीइंग गिवन बाय द बाय द यूनिवर्सिटीज़ देयर. सो इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, चाहे वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, चाहे G8 यूनिवर्सिटी है, चाहे मीडियम लेवल की यूनिवर्सिटी, ऑल आर गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर 1 or 2. So there is still time. Do your IELTS, get your funds into order, and if your parents' income is good, if your parents in government job, you can easily apply for loans also. So to cover the cost of tuition fees and living, आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं, ICICI है, HDFC है, और इवन नेशनलाइज्ड बैंक्स है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक, various other banks are there. So opportunity अभी भी एग्जिस्ट करती है. हमारे को बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, एंड वी बिन गेटिंग कॉल्स ऑलमोस्ट डेली अबाउट द कैपिंग थिंग. सो माई एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट इज, जो इंटरेस्टेड है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जुलाई 2025, वाई इफ यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस ईयर, यू हैव डन योर 10+2, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, सो आप इसी साल के लिए अप्लाई करो. डोंट वेट फॉर जुलाई 2025 सेशन. ट्राई एंड अप्लाई फॉर February 2025. 1, इसमें सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. आप नर्सिंग का कोर्स ले लो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऑल कोर्सेज अवेलेबल, IT सेक्टर, एवरीथिंग इज अवेलेबल. नर्सिंग के लिए भी इट इज़ वन ऑफ द मेन सेशन. July में there are very few institutions, very few universities which have a
intake in July 2025. So if you 10+2 medical pass, 7 band each ले लिया आपने, so nursing is one very good option you can do. 3 साल की nursing करो, get yourself going for 485, आपका 2 साल का post study work मिल जाए, get yourself registered with the nursing board there, and then you can apply for your permanent residencies as well. IT के अंदर बड़े courses available हैं, चाहे data science है, you can look at robotics, you can look at artificial intelligence, and anything. I mean, website designing वाला तो courses भी available है if you are looking for little easier side of IT programs. And one very popular program is networking and cyber security as well. So अगर आप ने यहाँ पे बैचलर डिग्री करा हुआ IT का, so you can go for master of cyber security as well. आपको डेस्टिनेशंस पता है ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस आर देयर, सिडनी, मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, एडिलेड, Brisbane is there, and few other. Canberra is also one of the Canberra, Tasmania. They're also good places to be in and do your education. Of course, bigger city में living cost महंगी है. अगर हम we go to a smaller city like Perth, or even for matter of facts Adelaide or Brisbane, so वहाँ पे living cost is less. Why is the living cost less? Because वहाँ rentals कम है. आप अगर सिडनी में जाते हो तो अगर आपको रेंटल कम पे रहना है तो यू हैव टू स्टे फार फ्रॉम द कैंपसेस, यू हैव टू गो आउट ऑफ द सिटी एंड स्टे. बट इफ यू हैव टू स्टे इन सिटी तो यू नेक योर दिस थिंग द accommodation costing is more, and students honestly who can afford it must stay at the campus. Most of the universities, G8 universities, even other universities have campuses, have accommodation on campuses. उसका बड़ा बेनिफिट है. लाइक बेलरैट के पास यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरेशन यूनिवर्सिटी हैज़ अ बेलरैट कैंपस, जिपलेट कैंपस, दे हैव गॉट बेरविक कैंपस, जहाँ हर जगह में अकोमोडेशन है. कैंपस में अकोमोडेशन लेने का एक और ही मज़ा है, बिकॉज देयर यू आर इंटरेक्टिंग विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अकेला इंडिया से नहीं आ रहे, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड व्हेन यू आर एट द कैंपस, you are studying, you can even use the library and use the sports complex and other facilities which are available on campus. And the best part is you make lifelong connections. अगर आप वहाँ पे किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, so lifelong connection. He goes back to his country, आप अपनी कंट्री आ गए, but somewhere down the line you can make connection and you can even do business together. So बहुत benefit है to stay and study on stay on campuses as well. बाकी कैंपस के नियर भी, यूनिवर्सिटी के नियर भी अकोमोडेशन अवेलेबल मिल जाती हैं. बट इन अ बिगर सिटी लाइक सिडनी एंड मेलबर्न, प्रॉब्ली यस, इफ यू आर लुकिंग आउटसाइड कैंपस के आपने रहना है तो यू मे हैव टू स्टे लिटिल आउट ऑफ द सिटी, वेयर यू कैन कैच अ ट्रैम और यू कैन कैच अ ट्रेन एंड देन कम टू द यूनिवर्सिटी एज वेल. एंड द अदर बेनिफिट इज आपको पता ही है कि द ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन विच आर रिकग्नाइज्ड इन इंडिया एज वेल, सो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लेते हैं तो आपका जो कैरियर ग्रोथ है, कैरियर पाथ है, कैन बी इन एनी ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड एज वेल. बाकी इनका जो कोर्स है, कोर्स भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एडिशनल प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट. एंड इफ एनी स्टूडेंट्स डन इज 10+2, वेरी गुड कोर्स, आई सजेस्ट दैट दे कैन इवन गो फॉर bachelors of teaching. That is one of the very good courses if the student can look at. अगर कोई business में related है, they can look at logistic course also. So supply chain में logistic course, these courses are in demand, so you must pick and choose your course of your choice. So and हमारे numbers are mentioned below. Any student who is not from Chandigarh, we are based in Chandigarh, we have office in Cathal as well. But if there are any students, who are unable to come to the city, they can request us. We'll give them half an hour, free counseling sessions as well. आपको counseling session चाहिए, anything you want to ask, I've got expert team here and we'll guide you on the visa as well. But before I end this, I would also say that students, must, keep another country also in their mind. Let's suppose if they are not able to meet the financial requirements of GT now. This student must understand, if they meet the academic requirements, offer letter आ गई. Once the offer letter has been issued to them, they have to meet the GT requirements, financial requirements. So उसमें आपकी पेरेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आपके पेरेंट्स एलिजिबल होने चाहिए.
अगर आपके पास पेरेंट्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न्स ही नहीं भरी हुई, you can't qualify for Australia. So you can look at other countries as well. New Zealand is one other country which is right next to Australia. वहाँ पे आपको 6 months of funding दिखानी है and money for entire 3 years or 1.5 years. The benefit of studying in New Zealand is again good. You know, New Zealand में अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हो और आप मैरिड हो, you have kids, so your kids are given free education. Likewise, you know, other countries like UK are there, UK is there, US is there, and even Canada is good. अगर आपने मास्टर करी, you can go for, if you have done bachelor's, you can go for a master's program. इसके अलावा there are other good countries that students can look at, which I suggest, keep suggesting students. You can look at Germany as well. Germany is a very upcoming country now, and वो permanent residency भी fast देने वाले हैं. And likewise, you know, France, Italy, if you got some relatives there, France, Italy, Switzerland, you know, these countries, Spain is there. So you can look at all these countries. So Australia से आप एक आधी country और भी देख सकते हैं. Don't just restrict yourself to Australia, because अगर आप GT नहीं meet करोगे, you just don't keep wasting time. You look at another country, apply there and go. Of course, हर country के लिए आपको IELTS और PT चाहिए. So first is join your IELTS and PT. Become eligible and then apply. Even if you have not done IELTS or PT and you still want guidance, we are there. We have always been there. We are there since 1991, 33 years, and you know, Australia is we are quite expert in Australian education, so we know what I'm talking, and I know what is coming ahead. And of course, restrictive kar liya, but still they will give visas. So by saying this, my numbers are mentioned below. Please be free to call us anytime, and we look forward to see you, and we'll give you online counseling as well. So thank you. Bye bye. Tata.